नमस्ते एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम फरवरी मंथ के जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहेगी, इन्वेस्टमेंट जो हम हमारे पोर्टफोलियो में करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो माय नेम इज कल्लप्पा, आई एम बी मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर माय पैशन। आई एम नॉट CB रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दिस इज जस्ट अ शॉर्ट डिस्क्लेमर। सो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्लीज डू कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। यस, सो या लेट्स स्टार्ट। सो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वी आर इन लास्ट वीक ऑफ जनवरी, लाइक 26 ऑफ जनवरी, एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू कैन कंसिडर दी स्टॉक्स फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, मैंने ऑलमोस्ट 15 to 16 स्टॉक्स को एनालाइज किया है, जो भी हमारी स्ट्रेटेजीज है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। एंड आउट ऑफ दोज आई हैव फाउंड टॉप 5 स्टॉक्स फॉर यू। ओके, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू और लेट यू नो हाउ टू एनालाइज द स्टॉक इन डिटेल। तो जो भी मैं 5 स्टॉक्स आपको आज बताने वाला हूँ, उनका डिटेल टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करेंगे, और एंड में आपको मैं बताऊंगा कि हम इसको कैसे अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करेंगे। या सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक इज अ लार्ज कैप कंपनी जो ऑलरेडी अभी आज की डेट में उसका जो रिसेंट ऑल टाइम हाई है वहां से 30% डाउन है। ओके, एंड व्हेन आई डिड बोथ लाइक टेक्निकल एंड फंडामेंटल, आई फाउंड दैट वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। So let me take you on the technical first. So this is an Axis Bank chart. अगर आप देखोगे, let me plot you for you like so this stock is down from 200 days, जो हम एवरेज लेते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज उससे भी नीचे है, and if you can do this like exact percentage, so this is exactly a 30% down from its recent all-time high. Now, is it sufficient to invest? No. We have to do fundamental analysis for this particular stock, which I have already done, but I would like to showcase you. So let's go on the screener. Obviously, this is a large cap company. If you can compare its P to its last 5 years of average, so average is 15.2, and but for this particular stock, it's 10.4. So we can give 1 point for the P. Then ROE is very good. Public holding is only 6.97%. Debt to equity ratio, obviously this is a financial stock, so debt to equity ratio तो ज़्यादा ही रहेगा, but placing percentage is 0. So we can consider this stock for the investment, but alongside we have to check its financials as well. So let me download the Excel sheet. Sorry. Yeah. And if you can download this, and if you go for the yearly income first, we will check yearly income statement. So what I can found it here. So already Axis Bank is very old company, बहुत पुरानी है, but 2015 से और अब तक का डेटा देखेंगे। So in 2015 इसका जो yearly sale था that was 35,000 CR, and now it is doing yearly 1,12,000 CR around, and accordingly the profit also has grown, if you can check here. Okay, so what we can say, the year on year sales is growing, alongside profit also growing. Then if you can check for quarterly numbers, अभी दिसंबर का भी नंबर आया है, and if you compare this number year on year quarterly results, that has grown by 4%, and the sales also grown by the 11%. Here is the December 23 numbers are here, and the December 24 numbers are here. तो टेक्निकली सेल भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और दो चीजें हम चेक करते हैं, दैट आर लाइक बोरोइंग्स आर ग्रोइंग ऑब्वियसली, क्योंकि वो बाहर से पैसा लेके उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसका लोन देते हैं, सो बोरोइंग्स बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन इसके रिजर्व्स बढ़ने बहुत जरूरी है साइमल्टेनियसली। सो इसके रिजर्व्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू आवर फंडामेंटल एनालिसिस शीट and we can give some points like ROC is good,
ROE इज गुड, डेट टू इक्विटी रेशियो तो इसको हम पॉइंट दे ही देते क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। पब्लिक होल्डिंग, क्या हमने पब्लिक होल्डिंग को चेक किया था स्क्रीनर पे? लेट मी चेक, हियर वी गो। पब्लिक होल्डिंग इज 6.97%, so below 30%, right? So we can give 1 point here. नाउ प्लेजिंग नहीं है बिल्कुल भी, पी रेशो हमने चेक किया था एवरेज से भी कम है, देन वी कैन गिव 1 पॉइंट। सेल्स ग्रोथ ऑब्वियसली 1, प्रॉफिट ग्रोथ 1। कैश फ्लो हमें चेक करना है, बोरोइंग्स एंड रिजर्व्स आर डूइंग गुड। कैश फ्लो एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो द इफ यू गो टू द फाइनेंशियल शीट्स, हाउ द कैश फ्लो इज गोइंग ऑन, सो इट्स एग्जैक्टली 80%। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट मिनिमम 80%, बट फाइनेंशियल कंपनीज में हम कैश फ्लो को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम बाकी की कंपनियां देखने वाले हैं जो नॉर्मली काम करते हैं जैसे कि टाटा हो या रिलायंस हो, वहां पे कैश फ्लो बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट? सो वी कैन गिव 1 पॉइंट फॉर द कैश फ्लो एज वेल। सो इफ यू कैन सी हियर, ओके, लेट मी कैरी फॉरवर्ड दिस फॉर्मूला। इफ यू कैन सी हियर, सो एक्सिस बैंक में तो हमें क्या हो रहा है अभी, 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स वी आर एबल टू गेट। सो ऑलरेडी इससे रिसेंट ऑल टाइम हाई से 30 पॉइंट नीचे है और फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, देन वी हैव टू कंसिडर दिस स्टॉक फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट आर द रेंज फॉर द बाय? इट्स 940 to 960। इस रेंज में आपको मिल जाएगा, यू बाय इट अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो अंडरस्टैंडिंग। एंड व्हाट टारगेट वी आर प्लानिंग, it's 1240 or 1340। so target one is 1240, तो partial booking वहां पे कर लेना, and partial booking will be on the side of 1340। how much to invest? You should invest 6 to 8% of your total capital, okay? Now let's move to the another stock. Oh, CERA, it's a small cap company, but let me tell you and let me show you the data, okay? So without data it's just a discussion, but when you talk on the data, that always will be a conclusive effect. Let me show you the technical first. तो सेरा को अगर हम देखेंगे, so recently it has touched around 10,000 and उसने वो 2 बार किया है, एक बार यहाँ पे भी आया था and then again it has gone and now it is like almost came down 40%, right? Now let me show you the fundamentals. स्टॉक तो गिर रहा है लेकिन फंडामेंटल्स इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं एंड देन स्टॉक इज गोइंग डाउन, देन दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, वी हैव टू कंसिडर दिस स्टॉक। सो या let's go and do fundamental analysis. The stock P is 35.1, but if you can take average of 5 years it's 42.1, so there is an opportunity to go up, right? So go to the fundamental sheet, simultaneously we can do these things, okay? So we have seen the P1. Now go to the screener. ROC 24.6, which we expect above 50 for companies like this. For financial companies, if it is below 10, no worries. ROE, it is about 19, we expect about 12. Public holding 17, जो हमें हमेशा हमें दिखता है कि 30% से नीचे होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो ना के बराबर है, प्लेसिंग परसेंटेज 0 है। सो दिस ऑल पॉइंट्स आर डूइंग गुड। नाउ वी हैव टू चेक दी its sales activity, right? Down door. Meanwhile, I'll just give the points here. So ROC good है, ROE good है, debt to equity ratio बराबर है, public holding is good, pledging is good. So now we have to check 4 points in the sheet. Let's open the sheet. Because I have checked it very well, इसका जो सेल भी है ना, by the way this company is comes under the construction line. आपने देखा होगा बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जो वॉश मशीन होता है वो सेरा कंपनी का लगा हुआ होता है. So this company is doing very well. If you can consider, see in 2015 the sale was 822 crore, now it is almost 1800, so double हो गया 10 साल में.
and the net profit was 68 crore and now it is doing 239 crore. So ये तो 4 times हो गया. So literally this company is making very good money. And if you can consider the quarterly numbers also, so September 24 के, दिसंबर के नंबर्स नहीं आए हैं अब तक. सितंबर 24 के नंबर्स ऐसे कि 490 करोड़ का सेल है. And if you can compare with the last year quarter, that is 461, and the profit also growing. So sales is growing, profit is growing. Now let's check the borrowings and results. So borrowings are decreasing. हमें हमेशा ऐसी कंपनी चाहिए जो खुद का कर्जा कम कर रही है, ना कि कर्जा बढ़ाते जा रही है, राइट. देन रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग. रिजर्व ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि कंपनी के पास पैसा होना चाहिए, एसेट्स होने चाहिए ताकि वो उसका यूटिलाइज कर सके, राइट. And that is doing well. Now let me check the cash flow, and the on average cash flow is 103%. So इन्होंने orders booking करके advance payment भी लिया हुआ है. So the cash flow is also good. So we can give 1 point to each point here, and again this company is also getting 10 out of 10 in my rating, right? So what we have to do, this is a small cap company, so we have to invest only 2 to 4% of our total portfolio value. What is the buying range? 6,450 to 6,600. इस रेंज में कहीं पे भी मिल जाए तो आप खरीद लेना. आप सोचोगे कि सर आप रेंज क्यों बता रहे हो? द पर्पस फॉर द रेंज इज कि अभी आप इमीडिएटली भी खरीद पाओगे ऐसा भी नहीं है ना. So you have to get money and all, and then you are going to purchase. So in this range, if you are getting, you can buy it. No worries about it. And target what we are planning, 8,000 and 9,500. So 8,000 पे partial booking and 9,500 पे partial booking, right? So let's move on. Oh, Hindustan Unilever, what a stock. It's a mid cap stock basically, but we have to check on the technical and the fundamentals. Let me take you on the technical first. हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें एक अभी रिसेंटली न्यूज भी है. एक्चुअली गुड न्यूज देके स्टॉक को नीचे गिराया है और हम अभी घुस जाएंगे इसमें. ये तो बड़े बड़े जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो करते हैं ऐसा कि स्टॉक को टॉप पे लेके जाते हैं एंड दे गिव अ गुड न्यूज. यहाँ पे एक गुड न्यूज दिया गया था, मर्जर ऑफ समथिंग और एक्विजिशन ऑफ समथिंग, एंड द स्टॉक हैज केम डाउन. बट नाउ दिस इज वेरी राइट अपॉर्चुनिटी फॉर अस. So this is almost 20% down from its recent high, and we have to check fundamentals. So let's go and check the fundamentals. So here is the Hindustan Unilever. Sorry, by mistake I have mentioned this is an mid cap company, but it is an large cap company. Sorry. What is the stock P? It's a 53.8, and if you can check here, the average of 5 years is 62.9. So there is a potential to grow, right? Then ROC is 27, very good. ROA is 20, very good. Public holding is just 12%. So there is opportunity to good momentum. Placing percentage 0, and debt to equity ratio again ना के बराबर है. So we are able to give all the points in this segment. So ये हम थोड़ा सा सेल के लिए फाइल एक्सपोर्ट करते हैं. मीनवाइल वी गो टू आवर फंडामेंटल शीट. लेट मी प्लेस इट हियर, देन वी गो हियर एंड वी ओपन द शीट. परफेक्ट. So let's go and check the sales and some financials. Before that we can give points here. So Hindustan Unilever ROC is good, ROA is good, debt to equity ratio very good, public holding is below 30%, placing is 0, P is good. अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सेल्स और ये चीज़ें चेक करनी है. सो ईयर ऑन ईयर सेल्स देख लेते हैं एक बार. सो द कंपनी व्हेन इट हैज स्टार्टेड वेरी अर्ली, बट जो डेटा हमारे पास है दैट इज फ्रॉम 2015, एंड वहाँ से अगर हम देखेंगे द सेल वाज अराउंड 32,000 CR. Now it is almost 62,000 CR, so double हो गया. And the net profit is around 4,300 CR. Now it is around 10,000 CR. So this company is doing consistently growth. Apart from that, if you see quarterly numbers,
the December 24 results are there, and the sale has grown only by 2%, but that is again consistently growing. Okay, and then the net profit has gone by 20%. Okay, so we can give 1 point to sales and 1 point to profit. Now let's balance sheet. Now let's check the balance sheet. So borrowings are growing. Okay, what we expect, borrowing should be need to be go decreasing, but यहाँ पे क्या हो रहा है, borrowings थोड़े से बढ़ते हुए जा रहे हैं, but at the same time reserves are growing. Okay, this is good point. So हम क्या करेंगे, borrowings का 0.5 कट कर देंगे और reserves के 0.5 दे देंगे, and if you can see the cash flow, it is 111%. So we can give 1 point for the cash flow. Now let's do the marking. So sales growth 1, profit growth 1, cash flow 1, borrowings इसके बढ़ रहे हैं इसलिए हम 0.5 देंगे. So how much we will get here? We will get almost 9.5. Right? Now let's move on. So हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इसका जो रेटिंग है वो इट इज 9.5. इट इज ऑलमोस्ट 20-22% डाउन फ्रॉम इट्स रिसेंट ऑल टाइम हाई. And I mentioned it is a mid cap, but it is a large cap company. You can consider to investment of a 6 to 8%. Right? Perfect. Now let's move on. The fourth one, Nestle. It is again a large cap company, but 21% from down from its all time high. Let me show. Nestle India. See, you can see on the chart. Such a good opportunity है man. You know the company like Nestle, क्योंकि बहुत बार हमें मिलती भी नहीं है ये कंपनी. So it is a very great opportunity. Now we have to check the fundamentals. Fundamentals are really good. एक हाथ पॉइंट में कहीं तो ऊपर नीचे है, but really good. A large cap company with stock P of 67, and if you can take average of 5 years, it's 79, means almost 80. So there is opportunity to grow. ROC above 100. obviously this company keep doing this because बहुत लंबे समय से मार्केट में है और इनके कैपिटल्स जो है उसको यूटिलाइज करना जानती है. So ROC is good, ROE is good importantly. Then debt to equity ratio 0.02, placing percent 0, public holding below 30. So we can offer all of the 6 points here to this company. Now we have download the sheet. So 26. Perfect. Okay, go to the fundamental sheet, make it here. So ROC 1 point, ROE 1 point, debt to equity ratio 1 point, public holding 1, placing 1, PE 1. Now let's check the numbers. Yes. So see, Nestle, everyone knows, we use their product every day in life. So in 2015 the sale was 8,000 CR and now it is 24,000 CR, 3 times हो गया. The profit 563 CR, जो 500 CR था, now it is almost 4,000 CR. So मैं तो ऐसे बोलूँगा कि literally they are, you know, there is a machine to make a money. The company is growing like nothing, right? So numbers are good. Let me check the quarterly numbers. September 24 numbers are there, and the number is 5,104. And if you compare there, like it is 5,037. So consistently, steadily grow हो रहा है, and that is only 1% of increment. And in sales, it is almost 9% of growth. Okay, so we can offer 1 point for both. Then if you go to borrowings. Here again the borrowings are increasing, so 0.5 cut down, but reserves are growing from 2,363 to 3,244. So reserves are growing, तो हम borrowings का 0.5 काट लेंगे और इसका दे देंगे. And again the cash flow is 120%, really good. So go to the fundamental sheet. Offer 1 point here, 1 point here, cash flow is 1 point. Because of borrowings we are cutting down 0.5. Hope so far you are enjoying this, and if you find this really interesting
And if you want to get connected with me, you can find a community link in the description and you can get connected. और ये जो मैं कर रहा हूँ अभी फंडामेंटल एनालिसिस, ये समझ में नहीं आ रहा है, so there is a series of videos in which I have explained this all. You can have a look on that. Now let's go to the last one, that is Motilal Oswal, my favorite. The fundamentals, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि ये कंपनी है ना, this is going to be involved very soon in Nifty 50. It is doing very great, but the right opportunity for us, it is 21% down from its all-time high. Before that, Nestle का मैं बताना भूल गया, really sorry, कि बाइंग रेंज क्या है. It is around 2200 to 2230 and the target price is 2450. First target होगा. Second 2700 is the second target. Okay, and how much you are going to invest? 6 to 8%. Perfect. Now let's talk about the Motilal Oswal. Motilal Oswal. Yes. और इसमें और एक रीजन से हम बाय करने वाले हैं, वो भी मैं बता देता हूँ. We have one strategy. If any stock is growing consistently 20% or more than that with all the green candles, so उसको हम we call it as growth rally. And if that stock comes down to that price, मतलब अभी यहाँ से इसने शुरू किया था and it has came down again, so we consider to invest here because जब इतना strong rally इसने दिया है, it is going to give the same rally again. So that's why that is one reason. And again इतनी अच्छी कंपनी है जो almost 21% डाउन है इसके रिसेंट ऑल टाइम हाई से. अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो 35% होती है और यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो इट्स 22%, 30% डाउन. ओके, सो टेक्निकली इट इज वेरी गुड. नाउ लेट अस चेक इट्स फंडामेंटल्स. मोतीलाल ओसवाल. Yes, so it's a mid cap company. Now if you can check, its stock P is 12.3 and average stock price is of this one, it's a 11.7. so cut to cut है, but हम यहाँ पे 0.5 पॉइंट इसका काटेंगे. Then ROC is 20, ROE is 32.6. Okay, public holding is below 30, placing is 0, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट ज़्यादा दिखेगा बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल कंपनी, और इसका कैश फ्लो भी अच्छा नहीं रहेगा जिसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा बिकॉज दे आर गेटिंग मनी एंड इन्वेस्टिंग, सो कैश फ्लो कट डाउन हो जाता है इस केस में, राइट. सो लेट गो ऑन द फंडामेंटल शीट एंड so ROC is good, ROE is good, debt to equity ratio is good, public holding is good, pricing is good. PE में हम इसका 0.5 कट डाउन करेंगे, ठीक है. Now then इसके फाइनेंशियल्स चेक करते हैं अभी. Now let's export this sheet. Perfect. Yes. So see the company, okay. In 2015, the sale of this company was 772 crore, approximately 800 crore पकड़ते. बट वहां से जो शुरू हुआ है आज मार्च 24 में, द ईयरली सेल इज अराउंड 7000 CR, 10 टाइम्स, राइट. और उसके अप्रोक्सीमेट अगर इसका नेट प्रॉफिट भी देखोगे, इट इज फ्रॉम 150 CR to 2500 CR. So what it means, the company is growing like nothing, they are literally making money, okay. And if you can check the quarterly statement, this quarter sale if we compare year on year, अगर year on year compare करेंगे, सितंबर 24 का जो नंबर आया है that is 71% up from the last year,
and the net profit is 110% up from its last year. What you need, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना नंबर बढ़ रहा है, और एक बेसिक मैंने किया है कि 2 ही क्वार्टर का नंबर आया, ठीक है, 2 ही क्वार्टर का नंबर आया, उसका समेशन अगर करेंगे तो उसकी सेल की एडिशन होती है 5150. ओके, 2 ही क्वार्टर का नंबर आया, अभी 2 क्वार्टर बाकी है, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सेल कितना है 7000, एंड 2 क्वार्टर का सेल का एडिशन कितना है 5000. नाउ डू द समेशन फॉर द नेट प्रॉफिट. सो नेट प्रॉफिट फॉर द 2 quarters is 2000, and entire last year net profit was 2500 CR. So hope you are getting my point कि अगले 2 क्वार्टर का नंबर जब आएगा, this company is literally going to double their sale and their net profit. So I'm going to give one point to sales and profit. Now let's check the borrowings. Borrowings को हमें इजीली 1 पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये बोरो ही करते हैं पैसा लोगों से, और उससे बिजनेस बनाते हैं. सो वी आर गोइंग टू गिव पॉइंट देयर, बट एट द सेम टाइम रिजर्व्स आर ग्रोइंग. 2015 में 1200 अप्रोक्सीमेट रिजर्व्स थे, जो अभी 8700 तक पहुंच गए. एंड कैश फ्लो ऑब्वियसली इसका निगेटिव रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल कंपनी जो पैसा लेती है और इमीडिएटली इन्वेस्ट कर दीजिए. सो देर इज अ कट फ्लो ऑफ द कैश, बट उससे देर इज नो मेजर इम्पैक्ट ऑन द कंपनी. ओके, सो या नाउ गिव द पॉइंट्स हियर. आई थिंक सेल्स ग्रोथ इज 1, प्रॉफिट ग्रोथ 1, कैश फ्लो 1, एंड बोरोइंग्स 1. सो अगेन इट्स अ 9.5. अगर हम पी रेशियो का एक भी काटते तो 9 तो आ ही जाएगा. सो वी कंसिडर कंपनीज अबव 7.5 फॉर द इन्वेस्टमेंट. या सो दिस इज अबाउट मोतीलाल ओसवाल. सो वी कैन कंसिडर, सो थोड़ा सा ये इधर से उधर हो गया, ठीक है. सो मोतीलाल ओसवाल इज अ मिड कैप कंपनी, एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ लार्ज कैप कंपनी. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस. So for Motilal Oswal, you can consider 4 to 6% of your total portfolio for the investment. Now let me give you one magical tip here. I don't believe in tips, but after investment क्या होता है कि now the market is currently in correction situation. So market correction कर रहा है. So it may happen after you buy the stock, any of this, market can fall more down. मतलब आपने for example मोतीलाल ओसवाल खरीद लिया, जो हमने रेंज लिया अभी 2200 से लेके 2230. आई थिंक इसमें थोड़ा सा कुछ गफला हो गया क्या, शायद मैं नंबर्स चेंज करना भूल गया. अलाउ मी ए मिनट, नंबर्स चेंज करना भूल गया मैं. सेम नंबर्स कैसे रह गए? या सो मोतीलाल ओसवाल देयर आर डिफरेंट नंबर, राइट? या रियली सॉरी. सो I may have picked a wrong PPT, but no worries, I'll give you the numbers. So you can pick up the Motilal Oswal from 670 to 720. Okay, it's a mid cap company. Perfect. 30% down. 9.5. This is इधर से उधर हो गया. No. So we can do this here, and in target, what target we are expecting? So the first target will be, this 900 will be say last only, right? So here we can consider, yes. So 900, so around 900 will be our first target, and 1000 will be our second target. Yes, and because this is a mid cap company, you can consider for 4 to 6% of investment. Perfect. राइट. सो हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि इफ यू इन्वेस्टेड इन एनी स्टॉक, लेट्स से मोतीलाल ओसवाल ओनली, यू बॉट इट अराउंड 770 to 670 to 700, and it goes down 10% more down. What you have to do,
अगर कोई भी स्टॉक इसमें से आफ्टर बाय इट गोज 10% डाउन, यू बाय इट अगेन, ओके, एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने 700 पे खरीदा है एंड इट गोज अराउंड 630, like 10% down, you buy that stock at 630 and those particular like 2 to 3%, okay, again we are not going to invest more, कम इन्वेस्ट करना है। और वो जो भी स्टॉक्स आपने लिए हैं उनको जो रिसेंट बाइंग था हमारा 700 का, वहां पे सेल आउट कर देना। सो वो जो वेटिंग पीरियड रहेगा आपका, वहां पे आपका वो प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टिप। Now I'm really thankful you have seen this video so far. I'm very grateful for that. अगर आपको जो भी ये एनालिसिस पसंद आया and you find that very valuable, you can share with your friends and family. Let me know your thoughts in comment section, what you think about these particular stocks, and if you want any stock me to analyze for you, let me know in the comment section. I'm very happy to do that. Yes, thank you so much. Keep learning, keep growing.